Assalamualaikum students, today we will learn comparative research method under the heading of research method in psychology 1. Comparative research is one kind of research methods you can use for psychological research. Comparative analysis is an old mode of research widely used within many, if not all, fields of scientific inquiry. So that is not the new method. It is very old method that has been used in variety of settings, in variety of fields. Not all, but in most of the scientific fields, you can do comparative research method to inquire a phenomenon, a situation, or something. Due to certain historical developments like the enormous increase in communication, technological advances, and the imminent intensification of internalization tendencies, comparative research, especially cross-national comparison, has increasingly been receiving much attention. So, ये डिफरेंट जो नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर आपको जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, इन चेंजेस की वजह से डिफरेंट आपको सोसाइटीज़ में भी डिफरेंस नज़र आएगा कि आज से 50 साल पहले किस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी और अब किस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. ड्यू टू द डिफरेंस इन द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट मेड इन डिफरेंट फील्ड्स, you can see a huge difference among nations. अब आप वेस्टर्न सोसाइटी को देखें तो और ईस्टर्न सोसाइटी को देखें तो आपको एक बड़ा डिफरेंस नज़र आएगा. मोड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बीन चेंज्ड और कितनी चेंजेस जो हैं वो हमें नज़र आ रही. टेक्नोलॉजी किस तरह की आ गई है, तो ये इन चीज़ों की वजह से आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा. सो it has increased the need of doing comparison at national international level. देखा जाए कि किस तरीके से जो है वो एक क्रॉस नेशनल एनालिसिस करके कंपैरिजन करके भी देखना ज़रूरी है कि किस सोसाइटी में किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है. So due to all these advancement and incorporation of technology in different societies and culture, social scientists now are compelled to do comparative studies to see how a society is being developed and what kind of changes exist among human beings living in different culture and different societies. Comparative study analyzes and compares two or more subjects or ideas. So with the help of comparative study, you can analyze what kind of changes are occurring in a society, and you can also compare two different objects, ideas, programs at national and international level. Comparative studies are the studies to demonstrate ability to examine, compare and contrast subjects or ideas. So not only you can analyze the object and idea, but you can also examine it in detail, compare them with each other. You can find out the contrast. You can also examine the contrast and similarity among ideas and subjects and objects. Comparative studies show how two subjects are similar or how two subjects are different. So with the help of comparative studies, you can find out to what extent two different objects are similar and to what extent two objects and ideas are different from each other. तो दोनों तरह की आप चीज़ों को देख सकते हैं. आप इसमें एनालिसिस भी कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं, सिमिलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं, और आप इसको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी कर सकते हैं. अगर आपने दो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनके दरमियान देखना है कि इनमें क्या सिमिलैरिटी है, इसी तरह अगर आप दो प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को भी देख रहे हैं तो आप उनमें डिफरेंस भी देख सकते हैं कि किस तरह का ह्यूज डिफरेंस मौजूद है. It seems to be more fashionable and evolving than ever as results from contemporary comparative research can be mounted. तो अब आप comparative research को देखें जो हो रही हैं तो आपको ये ज़्यादा एक fashionable form में evolving इसमें चीज़ नज़र आएगी कि evolutionary एक aspect से आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें changes आ रही हैं और किस तरह इसे किया जा रहा है, जो इसके results को देखकर आप easily अंदाज़ा लगा सकते हैं. Nearly all disciplines can apply to the study of almost any topic.
topic. So comparative research can be done in almost all kind of disciplines and fields, and you can choose any kind of topic to make comparison among or between objects and ideas. Ranging from comparative study of the working condition across nations. So you can also do the comparative study how different nations are working, developing and have revolutionized on self. तो ये आपको डिफरेंट नेशनल लेवल पर एक कंपैरिजन भी समझ में आएगा कि किस तरह की चेंजेस हो रही है, वो कैसे काम करती है. जैसे सपोज अगर आप इकोनॉमिक कंडीशन को देखें तो आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश में किस तरीके से वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ रहे हैं और किस तरह वो जो है वो प्रोस्पेरिटी उनकी जो है वो उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है और किस तरह की, तो उसको कंपैरिजन आप पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं. इस तरह डिफरेंट आप स्टडीज क्रॉस नेशनल स्टडीज करके आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं. थ्रू द एनालिसिस ऑफ द डिफरेंस ऑफ लाइफ वैल्यूज विद इन अ सिंगल सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट यू कैन ऑल्सो एग्जामिन द डिफरेंस एग्जिस्ट इन द lifestyle and the values in a specific culture. कि आप एक सोसाइटी स्पेसिफिक कल्चर में सोसाइटी में के लाइफ की क्या लाइफ वैल्यूज हैं या उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप देख लें या लोग किस तरीके से रह रहे हैं. यू कैन ऑल्सो सी द डिफरेंस कि आप एक कल्चर के अंदर भी, जैसे नेशनल लेवल पे भी आप कर सकते हैं कि पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोविंसेस हैं या डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग किस तरीके से उनकी लाइफ वैल्यूज़ क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है. टू द एग्जामिनेशन ऑफ द कंट्रास्ट ऑफ फेस वर्क इन वेरियस कल्चर्स, सो द स्टडी ऑफ द वैराइटीज ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट कंट्रीज. सो यू कैन ऑल्सो एग्जामिन और सी द कंट्रास्ट ऑफ फेस वर्क. फेस वर्क डिफरेंट कल्चर्स है ना, कि हाउ डिफरेंट कल्चर पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर आर लिविंग, वर्क एंड वर्किंग, और किस तरह वो कल्चर डेवलप कैसे हो रहा है, सोसाइटीज डेवलप कैसे हो रही है. तो जो कुछ आपको सामने नजर आ रहा है ना, जो चेंजेस नजर आ रही हैं, यू कैन इन्वेस्टिगेट दैट. और डिफरेंट इससे आपको वैरायटी के जो डॉक्यूमेंट्स डिफरेंट कंट्रीज में होंगे आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं. Comparison plays an important part in the most diverse branches of the humanities and the social sciences. So in the field of social sciences and humanities, comparative research method is considered an important research method to investigate the phenomenon. आप डिफरेंट सोशल साइंसेस की फील्ड में, साइकोलॉजी में, एजुकेशन में, पॉलिटिकल साइंस में, आप इन डिफरेंट फील्ड्स में रिसर्च को, कंपैरेटिव रिसर्च मेथड को देखेंगे किस तरह यूज हुई है और किस तरह इसने हेल्प आउट किया है इन क्लियरिंग द कॉन्सेप्ट्स. Comparison as a scientific method that refers here to the research problem in which two or more cases are explicitly contrasted to each other regards to a specific phenomenon or along a certain dimension in order to explore parallels and differences among the cases. So you can understand to read the word comparison. Comparison means to compare. क्या आपने कंपैरिजन करना है. कंपैरेटिव स्टडी तो इट्स बेसिक पर्पस इज टू कंपेयर टू थिंग्स, तो या टू और मोर थिंग्स. तो ये एक साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू आप टू और यू कैन इन्वेस्टिगेट टू और मोर केसेस and you can explore the contrast and similarity among two or more cases in relation to a specific situation in a specific context. तो वो उसमें आपको नजर आएगा कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं दो चीज़ों का, दो से ज़्यादा चीज़ों का, सिचुएशंस का किसी खास कॉन्टेक्स्ट में लेकर. जैसे आप ओवरऑल तो नहीं ना सबको स्टडी करेंगे कंपैरिजन. आप अगर कंपैरिजन दो ग्रुप्स में भी कर रहे हैं तो भी आप उसको एक कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, तो आपको स्पेसिफाई होना पड़ेगा ना. तो आप वो फिनोमिना एक सर्टन एक डायमेंशन होगी, कॉन्टेक्स्ट है, एक सिचुएशन है, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट सिचुएशन यू विल सी द डिफरेंस एंड द सिमिलैरिटी एग्जिस्ट अमंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, टू डिफरेंट थिंग्स. दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं. तो ये आपको डिफरेंट डायमेंशन को स्टडी करना सिखाती है. यू कैन एक्सप्लोर differences and parallels exist among the objects you have considered to be investigated for research purpose.
Comparing things is essential to basic scientific and philosophical inquiry. So, making comparison is very important and valuable work to do, especially when we talk about the scientific studies and philosophy. तो philosophical inquiry में आपको पता चलता है कि आप देखते हैं कि क्यों है क्या. जैसे आप पहले तो क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं ना, व्हाट इज दैट, फिर आप कहते हैं हाउ इज दैट, व्हाई इज दैट. तो आप एक फिलोसफिकल आपकी अप्रोच होती है. तो उस फिलोसफिकल अप्रोच के अगर हम इससे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपैरिजन जो है वो आपको बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट नजर आएगा. Comparative study is used to determine and quantify relationship between two or more variables by observing different groups that either by choice or circumstances exposed to different treatments. So comparative research method also helps you in determining the relationship between two variables. When you observe two different groups, you can groups which have been formed either deliberately or some circumstances and situation have compelled you to form those groups. तो वो एक ट्रीटमेंट पर्पस के लिए भी होता है ना, कि बाज़ वक़्त आपको बनाना पड़ता है कि आपको एक डिफरेंट ट्रीटमेंट देखना चाह रहे हैं, बाय चॉइस भी ग्रुप्स बनते हैं, तो उनमें डिफरेंस भी आपको नज़र आता है. इसके अलावा आप रिलेशनशिप भी देख सकते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स में through comparative research method. It looks at two or more similar groups' individual condition by comparing them. So you can consider two or more than two groups which are similar groups, and you can also compare the individual and condition you have applied during the comparative study. कि जो different conditions हैं, different individuals हैं, groups हैं, आप उनके दरमियान similarities को find out करेंगे. Comparative research is conducted mainly to explain and gain a better understanding of the causal processes involved in the creation of an event, feature, or relationship, usually by bringing together variations in the explanatory variable or variables. So, comparative research method develop the understanding of how an event is occurring and what causes specific behavior. आप उसके different relationships के फीचर्स को भी देख सकते हैं, वेरिएशंस को देख सकते हैं, एंड यू कैन फाइंड द कॉजेज एंड रीजंस ऑफ अंडरलाइन एंड ओवर बिहेवियर. कि कोई एक इवेंट भी अगर हो रहा है, कोई बिहेवियर है, तो अंडरलाइन फैक्टर्स क्या होंगे. यू कैन ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द कॉजेज, रीजंस ऑफ समथिंग, एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ व्हाई, क्यों हो रही है चीजें. ठीक है, तो ये भी कंपैरेटिव रिसर्च मेथड आपको इसमें हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने में कि हाउ थिंग्स आर क्रिएटेड, हाउ थिंग्स आर डेवलप्ड. यू कैन आल्सो फाइंड द आंसर ऑफ दैट. Comparative study is a research methodology in the social sciences that aims to make comparison across different countries or cultures. So, this research method help you in making the comparison at national international level. You can also see the difference among different cultures, societies, and you can do cross-cultural studies with the help of comparative research method. Comparative study play a central role in concept formation by bringing into focus suggestive similarities and contrasts among cases and subjects. So, in the light of similarities and contrast, a researcher has noticed while doing comparative research method, your concept can be formed or changed or built on the basis of those findings. के जो रिसर्चर ने फाइंड आउट किए सिमिलैरिटीज, उसको सामने रखते हुए आपके एक कॉन्सेप्ट जो है किसी चीज से रिलेटेड फॉर्म हो सकता है. तो कंपैरेटिव रिसर्च मेथड ऑल्सो play a significant role in concept formation and concept building. It is also used in hypothesis testing and can contribute to the inductive discovery of new hypothesis and to theory building. तो inductive discovery क्या होती है कि generation of idea, कि आप एक चीज generate होती है, एक बात होती है, उससे एक नई बात निकलती है, एक क्वेश्चन आता है, उससे एक दूसरा क्वेश्चन ध्यान में आता है, तो you discover more and more. So, comparative research method help you in formulating or framing new questions and hypotheses to be investigated and to be tested. And this kind of work
contribute to theory formation, theory building to the great extent. तो जितनी नई चीजें डिस्कवर होती हैं तो वो आपको एक थ्योरी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाती है. तो आप उसकी बेसिस पर एक थ्योरी बन जाती है कि जब ये चीजें कॉन्सेप्ट्स मिलते जाते हैं तो फिर एक नई थ्योरी जो है वो डिस्कवर हो जाती है. It is the act of comparing two or more things with the view of discovering something about one or all the thing being compared. So it is the way of comparing different cases, different objects, subjects, situations, programs. तो इसमें ये कि रिसर्चर जो है वो बेसिकली he or she will discover something related to the object or subject being compared or being investigated. तो इसके जो है वो डिस्कवरी की तरफ आपको लेकर जा रहा है ये कंपैरेटिव रिसर्च मेथड. This helps to establish relationship between two or more phenomena and provide valid reasons. So you will be having the cogent reasons to explain something or to explain the relationship between two or more phenomena. कि आप अगर जो भी relationships को भी देखेंगे तो वो एक reasons के साथ देखेंगे कि हाँ ये चीज रिलेशन एग्जिस्ट करता है दोनों में और ये रीजन है जिसकी वजह से ये रिलेशन जो है हमें इसकी बात कर रहे हैं. कंपैरिजन आर कैरिड आउट ऑन वेरियस लेवल बीइंग रीजनल, नेशनल, वाइडर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और एरिया ऑफ इंटरेस्ट. सो यू कैन कंपेयर different cases, objects, phenomena at national, international level, regional level, and even geographical boundaries can be considered while making comparison among the cases. तो जितने वो आपके programs या different जो एक चेंजेस आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आप कर रहे हैं तो आप उसको डिफरेंट जो है वो क्रॉस कल्चर लेवल पर भी वो स्टडीज उसकी कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कर सकते हैं, नेशनल लेवल पे देख सकते हैं हाँ इस एरिया में ये है, इस एरिया में ये है. Comparative study emphasizes on the explanation of differences and the explanation of similarities. So, comparative study help you in explaining the difference, why differences, what kind of differences occur between two or more subject, and what kind of differences and why these differences, why these differences exist among two cases, two different objects. So, you can also explain the similarity you have noticed between two object or two or more subjects on cases. तो उसको explain करने में कि explain क्या करेंगे कि you will describe the reasons of the difference and similarities. Comparative study involves understanding, studying, and explaining every aspects and events. Suppose you have selected an event or a phenomenon to be investigated through comparative research method, then you will explain or investigate each and everything related to that, and you will discuss and you will focus upon almost all aspects of this thing. तो वो ये नहीं होता कि आपने उस इवेंट को लिया है तो उसके कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है आप उसके हर एस्पेक्ट को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे. Its purpose is to arrive at some conclusion concerning past occurrences that may help to anticipate, explain present and future events. So, you make a conclusion based on comparative research findings that was specifically related to the past event. But on the basis of the current findings, you may predict something about the present and the future behavior and the events. कि अब आपने पास्ट से जो चीज़ है उस पर तो आपने स्टडी की है लेकिन आप फ्यूचर के बारे में भी तो उससे रिलेटेड बता सकते हैं ना कि अगर एक टेक्नोलॉजी है उसके यूज से ये चेंजेस सोसाइटी में आई आपने उसको किया है लेकिन फ्यूचर के बारे में भी तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं. Comparison is one of the most efficient method for explicating or utilizing tacit knowledge or tacit attitudes. तो comparison जो है वो ये आपका जो है तो इस मेथड के थ्रू जो है वो आप ऐसे एटीट्यूड्स या ऐसे नॉलेज जो मतलब एक साइलेंट होती है ना कि जो बहुत ज़्यादा इस तरह प्रोमिनेंट नहीं है या हिडन चीज़ें होती हैं तो वो उसको भी एक्सप्लेन करता है
तो उसकी भी रीजंस को फाइंड आउट करता है, या जिस पे बात नहीं हुई, आप कहते हैं जो साइलेंट चीजें होती हैं, तो उनको उनके हवाले से भी ये डिस्कस करता है, उनकी भी डिटेल प्रोवाइड करता है। तो कंपैरेटिव रिसर्च मेथड के थ्रू जो है वो रिसर्चर जो है he or she can be able to explicate those type of knowledge and attitudes. Comparative study involves two main styles. One is descriptive and second is normative. Descriptive comparison aims at describing, perhaps also explaining the invariance of the subject. It does not aim at generating changes in the object. On contrary, it usually tries to avoid them. So, comparative descriptive comparison help you in describing the difference or similarity exist between two or more subjects or events or phenomena. और ये जो है ये आपको मतलब वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो उस पर डिस्कस नहीं करेगा, जो डिस्क्रिप्टिव है सिर्फ बता देगा कि ये दिस काइंड ऑफ डिफरेंस एग्जिस्ट और दिस काइंड ऑफ सिमिलैरिटी एग्जिस्ट अमंग दैम, लेकिन उसके डिटेल में नहीं जाएगा कि ये क्यों जो है कंपैरिजन नहीं बताएगा क्यों चेंजेस हो रही हैं. हियर रिसर्चर विल नॉट फोकस ऑन द रीजंस बिहाइंड दैट, तो जो भी होगी उसको वो नहीं डिस्कस करेगा, वो जस्ट एक चीज जैसी है उसको डिस्क्राइब कर दिया. बट ऑन द अदर हैंड नॉर्मेटिव कंपैरिजन, a special style of comparative study is needed when the aim is not just to detect and explain but also to improve the present state of the object or to help improving or developing similar object in the future. So here a researcher will not only make the comparison between two or more object or cases or event, but he also will suggest something to improve the present condition of the cases, कि उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी है, डिफरेंस है, या जो भी चीजें हैं उनको इस तरह एक्सप्लेन करेगा, इस तरह बताएगा कि इम्प्रूवमेंट आ सके, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में इम्प्रूवमेंट या उसकी चेंजेस जो है उसको नहीं वो फोकस कर रहा है, लेकिन क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही है, क्या करना चाहिए. लेकिन नॉर्मेटिव में वो एटलीस्ट ये जरूर करेगा. नॉर्मेटिव में कुछ ऐसी इस तरह रिसर्चर काम करेगा, कंपैरिजन करेगा कि कुछ इम्प्रूवमेंट लाई जा सके, उसको डिस्कस किया जा सके, उसको प्रिडिक्ट किया जा सके कि आप इसको किस तरीके से बेहतर जो है वो बना सकते हैं. Students, these are the example of comparative research methods. The first comparative research paper is Rural Transformation and Rural Policies in the US and UK Routledge. अब ये एक comparative study है जो क्रॉस नेशनल लेवल पर की गई है, और यहाँ पर पॉलिसीज देखी गई है, रूरल पॉलिसीज किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है. The second paper is the economic impact of local food production and sales, और इसमें भी इन्होंने जो है वो impact देखा है local food production का और sales का, इसको comparison किया गया है. The third research paper is energy input in conventional and organic paddy rice production and Missouri and Italy, a comparative case study. तो ये जो उन्होंने केसेस लिए हैं और केस स्टडी की है, दोनों कंपैरिजन किया है कि यहाँ पर किस तरीके से राइस प्रोडक्शन है और किस तरीके से हो रही है. Number 4, psychological problems of married women living in rural and urban areas of Punjab province, a comparative study. So here researcher tries to find out the psychological problem in comparison while comparing the women or living in rural and urban areas of Punjab. तो वहाँ पे जो पंजाब के province है वहाँ पे rural areas की married women और urban areas की married women, उनके psychological problem किस तरह की, उनका mental health status किस तरह का, इसको comparison किया. So you can do research paper, you can do comparative research method at national, international level और regional भी आप वो उसको देख सकते हैं, इसको comparison कर सकते हैं subjects events में किसी phenomenon को लेकर. It's up to the objective of your study. Students, there is a class activity for you. You are required to frame the title of the comparative research method. So you are being given 10 minutes to propose the title through which you can compare two or more cases, object and phenomenon. So start working upon that.